Hare Krishna, Jai Jagannath. So today's discussion topic is Prajamandal movements of Odisha. So Odisha before just independence, what a famous movement hitla that is known as Prajamandal movement. जोथरे की जति की princely states थिले Garajat states, so they were merged. Okay, so before the final like merging process, which happened in the 1947 after 1947 independence only, जोटा की instrument accession वगैरह sign hitla. But ता पूर्वरो ही in the 1930s only. This kind of movement already started in the princely states and all over India, and especially in Odisha, this movement was known as Prajamandal movement. So Praja mane kono? Praja mane jo people or the subjects of a state. Okay, तो प्रजा माने कोन गोटे मूवमेंट बनेथिला एसोसिएशन करी तो जो तमे देखो छोटी लाइक ब्लैक रे अछि स्टेट गुडा so those are the princely states which are mainly divided into group A, group B, group C category. Okay, and एटा जो तुम ग्रे कलर देखछो सेउडा हला तोरा ब्रिटिश डायरेक्टली ब्रिटिश अंडर थिला, बट जो ब्लैक कलर अछि स्टेट्स गुडा almost 26 princely states are there, Odia speaking states. So those are actually those states have internal sovereignty, you can say. Okay, and you can see this is the photo of our first chief minister of Odisha, Dr. Hare Krishna Mahatab. Okay, so his name always comes in the Prajamandal movement because he in the final period of the Prajamandal movement he is the main leader, you can say, who is who encouraged the people or led the movement of the Prajamandal movement to join to the Odisha state. Okay, so let's start. The Prajamandal movement is in the British rule the princely or the native states of Odisha, also known as Garajat states. So already I had discussed about these things also. कि जो ओडिशा जो प्रिंसली स्टेट माने थिले तांको गरजट्स भी कहा जाउतला, बेसिकली जो बेसिकली एडा कोन थिला माउंटेनियस रीजन थिला, तो से माने निजर गोटे किछि ऑटोनॉमी रखुथिले, जे माने मेन जे माने थिले रूलर्स तांको किछि टैक्स वगैरह देकी दे यूज्ड टू कीप देयर इंटरनल सॉवरेनिटी. ओके, so these states used to be known as Garajat states. तो এই सिस्टमटा ऑलरेडी बहुत वर्ष पूर्व चली आस्तुला. You can say during the time of Gajapati dynasty, then Mughal rule, then Maratha, then British. So during the British rule, the princely or the native states enjoyed internal sovereign power. Gradually, the kings of these areas became repressive. So because अंग्रेज माने भी तांको तो कोन बहुत टैक्सेशन नउथले, तो से माने से टैक्सेशन पाई प्लस निजर luxurious life पाई कोन करियो प्रजा मान को ऊपर अत्याचार करथले. So their exploitation and repression became a characteristic feature of all the native states. The people were exploited through several means of taxation like rasad, मागण, बेठी, बेगारी. तो ये सब रा मीनिंग कोन हमें नेक्स्ट स्लाइड्स रे पढिबा. फाइनली व्हेन तो ए प्रकार विभिन्न प्रकार टैक्स होतला बेसिकली. ओके, जे माने राजा माने कलेक्ट करथले फ्रॉम द पीपल of their state or the subjects, you can say. So finally when exploitation of the people became unbearable, तो जतले को भी जगह रे को भी like that can be a democracy, that can be a your communistic society or socialist society or a monarchy. जति जते बेले कोन बहुत ऑपरेशन हुए, रिप्रेशन हुए, तो जतले कोन हुए पीपल माने जो सब्जेक्ट्स माने कोन करंती रिवोल्ट करंती. ओके, सो you can see everywhere in the world this kind of things happens. Okay, so either the kings or the rulers have to give some compensation or they will topple the government itself. So finally when exploitation of the people became unbearable, they were captivated by a burning desire to revolt. So they are तो जेटा मु डिस्कस करले रिवोल्ट होबो सबले जोठी भी ऑपरेशन बहुत अतिरिक्त बढ़ी गला माने रिवोल्ट होबा तो रिवोल्ट ही होबो. काइना जे आर्मी भी जे माने प्रोटेक्ट करथांते रूलर्स मान को, दे आल्सो समटाइम्स लाइक जेते बहुत ऑपरेशन हे जाय से माने प्रजा मान को ही सपोर्ट करंती. So they are accumulated hatred and anger against the ruling princes who are manifested in the Prajamandal movement. तो से कुछ की they are accumulated hatred, there means the people of the states, princely states, and anger against the ruling princes were manifested in the what Prajamandal movement. तो जो तांकर फ्रस्ट्रेशन ना हेट्रेड थिला ताकू तार गोटे ताकू माने कोन बाहर करिया पई गोटे माध्यम दरकार थिला, तो ता माध्यम बनला कि Prajamandal movement. So during the Gajapati rule in Odisha, already I had said this point, the Gajapati rule पाखा कि एटा स्टार्ट हितला सिस्टम ता कि प्रिंसली स्टेट माने कोन निजरो ऑटोनॉमी रखुले, तो फिडुशियरी किंग्स भी कहले से पई जो सामंत भी कहा जाय. So the hereditary feudatory kings ruling in the hilly tracts of Odisha, तो जो से hilly tracts जो northern Odisha और से वाला region रे जोची सेटा Garajat hills भी कहा जाय, central and northern Odisha. Okay, so the hilly tracts of Odisha had been enjoying internal sovereignty of power.
तो गजपति रूल टाइम रो ही माने हेरिडिटरी थिला ए माने तो जे भी मेन रूलर रहना काहे कि एमानकर रूल चली थिला सिंस द डेज ऑफ मुगल्स आल्सो दे आर देयर सो बट इन द एरियाज ऑक्युपाइड बाय द मुगल्स तो जो एरिया मुगल्स माने ऑक्युपाई करले से एरिया कहतला मुगलवादी किंगडम हला तो जोडा इंटरनल सॉवरेनिटी रहतला ताको कहतला गरजट स्टेट कहतला और जेटा मुगल कंट्रोल थला मुगलबंदी कहतला ताको तो द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इन ऑपरेशन जोडी मुगलबंदी किंगडम थिला द किंग्स ऑफ दिस माउंटेनियस स्टेट्स और द गरजट स्टेट्स पेड टैक्सेस एंड होमेज टू द मुगल्स तो सेमाने जो बिकॉज़ मुगल्स माने कि गजपति डायरेक्टली तांको ऊपर रूल करनथले तो दे सेमाने कोन करले तांको अलाइड स्टेट की रहथले फिडुसरी स्टेट की और सेमाने कोन करले ता बदल रे तांको किछि टैक्स दोथले टैक्स एंड होमेज ओके so when the Marathas came same system also continued when the Marathas occupied in Odisha तो मराठास माने मुगल बंदी एरिया को नेइथले बाकी जो एरिया थला से माने से भलिया the kings of the Garjats areas paid tribute to the Marathas in exchange for the returning their internal sovereignty तो तांकर internal sovereignty रक्षा करा पय से कोन टैक्सेस वगैरह दोथले जे भी मेन रूलर रहतला so the system was perpetuated when the British captured Odisha that is the Garjat princes paid taxes to the British so the British आसले तांको देले टैक्सेस हला तो से माने तांको sovereignty सबले रखुतले internal sovereignty हला in 1936 the new Odisha province was created तो मैं ऑलरेडी स्टडी कर सकते हैं ओडिशा प्रोविंस के था 1936 में एंड इन द सेम ईयर द ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी तो बेसिकली एथरे कोन हला जो ब्रिटिश अंडर जतिक स्टेट थला सेटा को नै कि ओडिशा प्रोविंस हेगला बट जोडा ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट थला दे वर सेपरेट ओनली सो द सेम ईयर द ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस तो जो स्टेट्स एजेंसी में ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी माने जतिक जो थिला गरजट्स और द प्रिंसली स्टेट्स सेटा भी तीन भाग में विभक्त हेगला तो ओडिशा स्टेट एजेंसी ऑफ द 26 गरजट रीजन्स तो जो 26 टा गरजट रीजन्स थिला ओडिशा स्टेट एजेंसी रे सेथुर कोन 23 टा थिला 23 रहला ओडिशा भितरे 23 वर रिटन इन ओडिशा एंड द रिमेनिंग 3 मयूरभंज स्टेट इन द बेंगल एजेंसी मयूरभंज टा बेंगल एजेंसी रे पळेला आ कोलाहांडी एंड पटना रिटन इन द छत्तीसगढ़ एजेंसी पटना तो जानथियो बलांगीर को पटना कहतला पटनागढ़ तो 26 टा गरजट रीजन थिला जोडा कि 1936 रे तो सैथिरु 23 टा ओडिसा रे रहिला माने ऑल्दो इट वाज नॉट मर्ज्ड बट ओडिशा डिवीजन रे ओके आ मयूरभंज रहिला कोडी बेंगल एजेंसी रे आ कलाहांडी पाटना कोडी रहिला छत्तीसगढ़ एजेंसी रे ओके तो ईस्टर्न स्टेट एजेंसी तो तीनटा एजेंसी थिला गोटे ओडिशा ईस्टर्न स्टेट एजेंसी बेंगल स्टेट एजेंसी छत्तीसगढ़ एजेंसी तो सेथरे डिवाइड हेतला 36 टा गजर्स 26 टा 26 so in 1937 in accordance with the importance of the native states they are divided into group A B and C sections ग्रुप ने कैटेगरी ए ग्रुप ए व्हाटएवर यू कैन से तो ए कैटेगरी जो 26 टा भितरु ए कैटेगरी के मानथिले ढेंकानाल केउंझर मयूरभंज ए कैटेगरी माने टिके जोडा बड़ लाइक राज्य थिबो जे माने टिके अधिका टैक्सेशन वगैरह दोथिबो अधिका टिके पॉपुलेशन भी थिबो तो ढेंकानाल केउंझर मयूरभंज बामंडा बौद्ध गंगपुर पाटना कोलाहांडी सोनपुर सरायकला एंड नयागढ़ तो 26 टा भितर 11 टा हला ए कैटेगरी रे हला 11 आर इन ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी के रहले आठगढ़ बड़म्बा नरसिंहपुर आठमल्लिक हमडोल दसपल्ला खंडापड़ा खरसुआ रैडाखोल तालचेर बलांगीर नीलगिरी तो 12 टा रहला कोथरे बी कैटेगरी तो 11 बार केते हला 22 23 हेगला राइट सी कैटेगरी के रहला पालहड़ा रणपुर एंड टिगरिया सो पालहड़ा रणपुर एंड टिगरिया समान रहले सी कैटेगरी prior to the Prajamandal movement the whole lot of these Garjat states paid taxes to the British and were loyal to them in return the British allowed them to enjoy their internal sovereignty तो जे भी रूलर आसलो तांको माने टैक्सेस देउथले तांको प्रति लॉयल रहउथले और तांको इंटरनल सॉवरेनिटी तांको तांको मिली जाउथला कॉजेस ऑफ द प्रजामंडल रेबेलियन किंतु ए जो सिस्टम ने चलथिला इन द 1930s व्हाट हैपेंड द पीपल ऑफ दैट प्रिंसेसेस दे स्टार्टेड रेबेलियन स्टार्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर प्रिंसली प्रिंसेस और किंग्स सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द गरजट रूलर्स तो फर्स्ट कॉज ला कोन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय हुम बाय द गरजट रूलर्स द किंग्स ऑफ दिस गरजट स्टेट्स led a life of extreme luxury and pomp तो से लग्जरी जो ताको लग्जरियस लाइफस्टाइल पे पैसा कोड आसीबो तो हेंस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज एसेंशियल टू कैटर देयर नीड्स तो से मनी काड आसला पीपल मान को पकरो ऑल द अमाउंट वाज एक्सट्रैक्टेड बाय द किंग्स ऑफिसर्स फ्रॉम द पीपल राइट द पीपल्स कंडीशन ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर मिजरेबल तो लोकमान कंडीशन होला बहुत मिजरेबल हो गला सो व्हेन देयर इकोनॉमिक बैकबोन वाज ब्रोकन एंड दे कुड एंड्योर नो मोर द पीपल टुक टू रिवोल्ट अगेंस्ट सच एट्रोसिटीज so it's like you must have heard the last straw which broke the back of the camel तो बहुत ऑपरेशन करी कर चलथले बट दैट इज अ स्टेज कोन हुए जतरे पीपल माने कोन ताको बैकबोन भांगी जाय एंड रिवोल्ट करी बसंती सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन
Second is operation of the kings also. Apart from the regular taxes, तो जहाँ तो taxes नेले people are prepared. ता वास्ते तो बहुत extra जिनिस भी रहूतला. Like what? The kings extracted money and services from the people. तो पैसा भी नउतले, service भी नउतले from the people. Free service through various dubious means. How? So these are the means: बेठी, बेगारी, मागण, रसद, भेटी and कर सामग्री. So बेठी माने कोन? बेठी खटिवा जे तुमे सुनिथिबो तो बेठी रो actual माने what? Applied for palace construction and garden beautification without paying any wages. It's like a forced labor. तो forced labor कराउतला तो सेटा कहतला कोन? बेठी. बेठी खटिवा जाउछ माने कोन? तुमे काम करियो बट तुमको किछि पैसा मिलियो नाही. Okay, so this was happening. So apart from taxes, these are the things are going on. तो जो राजा मानकर तांकर पैलेस कंस्ट्रक्शन पई गार्डन पई जहां भी किछि लेबर लागिवो से हमको फ्री रे से मानको करिया पडला तांकर सब्जेक्ट्स मानको. So सेटा कहतला बेठी. Now what is beggary? So beggary is, what is beggary here? To carry goods and domestic articles of royal officers. राजा मानकर जो ऑफिसर्स माने रहथले तांकर goods and domestic articles को कैरी करियो माने ट्रांसपोर्टेशन. So that too free of cost. तो फास्ट तो सेमाने सेठी लेबर कले जो कंस्ट्रक्शन काम माने सेठी फ्री ऑफ कॉस्ट हे गला. जोडा की लाइक मैनुअल लेबर होतला जोडा भी सेटा सब फ्री रे करिया पडला. तो सेटा बेठी का होतला, बेगारी का होतला. तो तांकर जो राजा मानकर तो सेवा कले तांकर जो ऑफिसर्स मानको पई भी जो सामान लाइक रिक्शा और जो पालकी वगैरह तो भाभी करथले घोड़ा गाड़ी व्हाटएवर. तो ऑल थिंग्स हैज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. सेटा बेगारी कहतला. व्हाट इज मागण? व्हेन देयर वाज आइदर ए वेडिंग और डेथ. तो राजा मानकर जदी बाहागर हैला कि तांकर की मरि गेला तांको पई भी पैसा के दबो कि राजा जदी कार भी किनला इवन तांको लग्जरी पई भी the people had to pay either in cash or in kind. That is called magana. What is rasad? When the king's officers toured village areas, तो राजा मानकर ऑफिसर्स माने जे माने कि ऑपरेशन ही करथुले टैक्स कलेक्ट करथुले जबरदस्ती. सो सेमान जतरे टूर करियो विलेज रे and put up camps at different places, their food तांकर खाद्य and comforts were to be provided by the praja or the people. सेटा कोनथि रसद हला. तो बेठी, बेगारी, मागण, रसद. देन बेठी पर हैला भेटी. भेटी जो अबे हमें भगवान को दो भेटी जो जानथिबो हला. भेटी दे की पूजा करने हमें भेटी दे की जुआर हो. So it is a gift which was bound to be offered by the people to the king when the king gave them audience. जेंते हमें भगवान को दर्शन कले जेंते भेटी पकाओ से बेले जते राजा दर्शन देबे प्रजा मान को सेते तुमको भेटी देबो पड़ियो. Okay, that was another thing. And finally kara samagri. The king was to be provided with rice, pulses, cereals, ghee at half the market price. See, अबे गवर्नमेंट कोन गरीब लोक मान को कम पैसा रे धान चावल दउची डाली. बट सेतल कोन थिला उल्टा. राजा माने कोन करबे राइस, पल्सेस, सीरियल्स तांको कोन मार्केट रे जति प्राइस थियो तारो आधा पैसा रे मिलियो. So this is, can you imagine, along with taxes so many things they are like everything they are exploiting their people. First to betti nele, then beggary, magana, rasa, bhetti, kara samagri, everything. So the people had to endure such tyrannical whims of the king. So in future, however, they became the means to incite the people to revolt and thus paved the way for Prajamandal movement. So then finally frequent tax increase. तो जहाँ तो tax ला ताको भी frequently increase कर चलते हला. तो से जदि तांगर सेतिक रे कुळ नथला जदि अंग्रेज माने बढ़े देले कि किछि जिंस हला. So they used to increase the tax. तो फास्ट तो टैक्स नउथले जहां नेले इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन तो कले. देन ऑपरेशन भी कले बहुत टैक्स तो विभिन्न जिंस जोड़ी के प्लस जहां भी टैक्स ला ताको भी इंक्रीज करले फ्रीक्वेंटली. सो ऑल दीज रीजंस आर वेरी इंपोर्टेंट रीजंस फॉर द प्रजामंडल रेबेलियन. फर्स्ट फेज ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट. तो प्रथम फेज जो प्रजामंडल मूवमेंट थिला कोन थिला? दैट इज बिटवीन 1908 टू 1928. तो सेट 5 peasant rebellions. Peasants means जो farmers or workers, you can say laborers. So they rebelled. So 1908 ରୁ 1928 भितरे 20 वर्ष भितरे 5टा रेबेलियन हितला को जगह रे बामंडा रे हला. सो बामंडा रे हितला 5टा रेबेलियन. बामंडा एबे बामडा कोंती जोडा कि तुमरो बेसिकली देवगढ़ एंड संबलपुर वाला एरिया. So they resented the unjust tax increase. When a few leaders were imprisoned, the rebellion subsided. तो जतरा हम रेबेलियन स्टार्ट करतले कोनला कि लीडर मान को से माने जेल पुरे देले तो रेबेलियन कोन हेला बंद हेगला. ढेंकानाल रे भी गोटे रेबेलियन हितला इन 1922. सो 1922 रे ढेंकानाल रे रेबेलियन हितला. पीपल्स रेबेलियन ब्रोक आउट इन 1922 अंडर द लीडरशिप ऑफ महेश्वर सुबाहु सिंह, पूर्णचंद्र महापात्र, बेणुधर पंडा. पुणी बामंडा हला, ढेंकानाल हला, नीलगिरी हितला 1928 रे, बौद्ध रे हितला 1930, तालचेर हितला 1932. सो ऑल दीज रेबेलियंस वर सप्रेस्ड रूथलेसली. तो सेइ टाइम रे कोन बेसी बड़ स्केल रेबेलियन हितला तेनो बहुत रूथलेसली माने ताकू बंद कर देथिले by arresting the leaders, by punishing the like people who are involved. So this thing happened in the first phase.
but in the later stage in the 1931 कोन हला गोटे बड़ तरफ माने सब गरजट जति की लोक थिले समान को भीतर गोटे एसोसिएशन हला तो जदि गोटे गोटे स्मॉल स्मॉल जगह रहबो कोन सेटा को इजीली तमे बंद कर दे परबो जति पॉइंट यूनिटी न रहबो it is very easy to repress the like movement. Okay, so to give a proper direction to the Prajamandal movement, for the first time on 20th June 1931 the Odisha Garajat State People's Association has convened at Cuttack. So गोटे बड़ स्केल रे कोन हला प्रथम थर पई इन 20 जून 1931 रे Odisha Garajat State People's Association ना Odisha Garajat State People Association कडी हला कन्वेन हला कटक रे. The first session was presided by whom? Bhuvanananda Das. तो प्रथम सेशन के प्रेसिडेंट कले Bhuvanananda Das. The conference gave a call to the subject people to establish their rights through rebellion. Okay, the conference gave a call to the subject people to establish their rights through rebellion. After this, on 23rd 24th June 1937 the second session of the conference was presided over by a senior leader of the Congress, Pattabhi Sitaramaya. हला तो जो तुम देखु छडी कोन ओडिसा गरजट स्टेट पीपल्स एसोसिएशन त तार गोटे माने सब जति की गरजट स्टेट ले जो 26 टा सेति को जति की पीपल्स ले जे माने चाहतले से माने प्रिंसी स्टेट्स मान को अत्याचार कमी जाऊ तो से माने गोटे कॉन्फ्रेंस कले केबे फास्ट तर पई 20 जून 1931 रे हला कोडी करले कटक रे तार ताकू प्रेसिडेंट के करले भुवनानंद दास और सेकंड टाइम हला 1937 आफ्टर 6 इयर्स 23rd 24th जून ताकू के करले फेमस कांग्रेस लीडर पट्टाभी सीतारामया जे की जहा को भी गांधी जी सपोर्ट करथले हला अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस if you remember in the 1938-39 congress session. So the conference adopted a resolution for the abolition of beggary, magana, rasad and bheti. So yara meaning so already last slide I discuss कर सारछु bheti beggary कोना magana कोना rasad कोना. So here after an inquiry committee was set up under Satish Chandra Bose, Balwant Rai Mehta, Brajasundar Das and Sarangadhar Das. The committee was sympathetic to the cause of the Prajas. तो जो committee हला गोटे inquiry committee तो सेते Satish Chandra Bose, बलवंत राय मेहता, ब्रजसुंदर दास, सारंगधर दास सेवन सु थिले तो से माने सिंपैथेटिक थिले टू द कॉज ऑफ प्रजा एंड इट सपोर्टेड देयर डिमांड्स. दिस गेव ए न्यू मोमेंटम टू द प्रजामंडल मूवमेंट है ना. सो आफ्टर दिस 1931 and 1937 कॉन्फ्रेंस इन द 1938 प्रजामंडल मूवमेंट इन नीलगिरी तो जो बहुत जगह रे हेतला प्रजामंडल मूवमेंट तो ताबे तो नीलगिरी अन्यतम. सो अंडर द इनिशिएटिव ऑफ हरे कृष्ण महताब, सारंगधर दास ए प्रजामंडल वाज फॉर्म्ड एट गरिया मळ नीलगिरी रे. इट्स प्रेसिडेंट वाज कैलाश चंद्र महंती. तो कैलाश चंद्र सी हरे कृष्ण महताब आ सारंगधर से माने ऑल ओवर ओडिसा लीड करथले बट सब जगह रे गोटे गोटे रीजनल लीडर भी थिले. तो नीलगिरी रे केतले रीजनल लीडर कैलाश चंद्र महंती जे की प्रेसिडेंट हेले आ सेक्रेटरी केले बनमाली दास. तो बनमाली दास एंड कैलाश चंद्र महंती दे बोथ आर द लीडर्स फ्रॉम नीलगिरी प्रिंसली स्टेट. ऑन 11 जुलाई 1938 that is on the day of Rath Yatra. तो रथ यात्रा थिला से न सो से माने गोटे बहुत बड़ गैदरिंग को एड्रेस कले एंड मेड पॉइंटेड रेफरेंस टू द मिसरूल ऑफ द किंग. देयर डिमांड्स इंक्लूडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी टू स्टॉप पेइंग अनजस्टिफाइड टैक्सेस एंड फॉर इवॉल्विंग वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो ता डिमांड कोन थिला एग्रीकल्चर पॉलिसी नुवा करा जाऊ, अनजस्टिफाइड टैक्सेस को बंद करा जाऊ आ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वेलफेयर माने ता पई इवॉल्व करा जाऊ वेलफेयर पई. However, the people were advised to achieve their aims through non-violent means. तो तामाने non-violence means ही करते गांधीयन methodology रे. But by the king's order 120 जन को अरेस्ट करा गला जोते कि 50 जन को 50 टन लेखा फाइन अदा करा गला और बाकी लोगों को जेल में पड़ दिया गला. So when Banawali Das was marching towards Machua Patna सेतरे 5000 लोगों को लीड कर जाउले to start peaceful satyagraha, the king sought help from Odisha police. Finally, through the interventions of political agent Major Bejelgate, Hare Krishna Mahatab and the Balashwar magistrate Sulaiman, rebellion came to an end. So people wan ko demand को भी was considered by the king to a very large degree. तो लोग wan को demand को king कौन ग्रहण कले और rebellion कमी गला. Okay, so that was the first important Prajamandal movement in 1938. Then Dhenkanal ले गोटे बहुत बड़ा important movement हितला. The Praja of Dhenkanal started a rebellion against the payment of beti, magana. तो almost सब जगह से region हितला. Magana, rasad, bheti and all. The objective of the Prajamandal were printed in pamphlets. जहार नाम थिला कोन रण भेरी हला. तो मेनली ढेंकानाल जो सब लीफलेट और pamphlets सब बाटा हला ता नाम थिला कोन रण भेरी. तो जोटा कि हमें मालती देवी को वीडियो भी स्टडी करथिलु. मालती देवी and Namakrishna Chaudhary all they are involved in this movement also. On 13 September 1938, despite police warning, Hare Krishna Mahatab, Namakrishna Chaudhary, Sarangadhar Das, they addressed a rally of 50,000 men. तो सेतरे कोन हला स्टेट पुलिस और ब्रिटिश पुलिस मिसे की ताको लाठी चार्ज स्टार्ट कर देले.
The Congress leadership nevertheless advised people not to get cowed down by such atrocities but to continue with the movement in a peaceful manner. तो सेमाने तांकर गांधीयन मेथोडोलॉजी यूज करके किछि वायलेंस कोले नाही. Harmohan Patnaik was sent to Cuttack jail and houses of many of the Prajamandal leaders were burnt. A 12-year-old Baji Raut तुम जानते हो famous like the youngest martyr in the Indian freedom movement. So he sacrificed his life. ହେଲା से कोन पुलिस मान को तांको जो नदी थिला नीलकंठपुर घाट ब्राह्मणी नदी रे ढेंकानाल सेटा को पार करिया देला नै तो ताको गोली कर देथिले से माने. So this thing happened in 1938 only October. Okay, तो 29th October 1938 को समझते कोन सब जति की लाइक गरजट जो एसोसिएशन थिला से माने कहले हमें ए दिन सेलिब्रेट करिया व्हाट गरजट डे. 29th October 1930 was celebrated as 29th October 1938 was celebrated as the Garajat Day. Finally, in 1939, as per the report of the Central Police Bureau, the British government withdrew all powers of the King of Dhenkanal. So, jodi Prajamandal movement hutla, state British finally they used to interfere. Like concession deba pai Raja nu koha hutla. King's powers are now vested in the hands of Khan Bahadur Eke Khan. Dhenkanal kola pura sabu power hi hote diya gala. Ab power ka hath de diya gala Khan Bahadur Eke Khan. Ab Bethi ko remove kar diya gala. Bethi was revoked. Land tax was reduced from 4 anna to 2 anna. All arrested leaders were released. तो ये सब गला परे ढेंकानाल प्रजामंडल मूवमेंट से टाइम रे शांत होई जेतला. ना तालचेर रे कोन हितला. The Prajamandal movement in Talcher assumed dangerous proportions, extremely hateful and inhuman treatments like severe caning, spitting and urinating in the people's mouth were meted out by the Talcher royal authorities. Wow. So semane ei bodiya tortures korthle bhabo tume. Even the like princely like the officers princely status जो माने royal authorities मान थिले. In 1939 under the leadership of Talcher Prajamandal president के थिले पवित्र मोहन प्रधान, the people presented the king a petition of demands for stopping such actions, barbaric punishments and for the withdrawal of Magona Rasad etc. The movement at Talcher was continued by Krutiwas Rath, Magoni Pradhan, Dasrati Pani. So all these things you don't remember, just remember the name Pavitra Mohan Pradhan. He was a leader from Talcher, princely state. Okay. So तापरे कौन हला, many leaders of the Congress they reached Anugul and the political agent सेठी थिले किया Mr. Hessian and Hare Krishna Mahatab they signed a pact in 1939. एटा कोनती कोन Hessian Mahatab agreement. So Gandhiji expressed his satisfaction over the agreement. The king had to accept most of the clauses of the agreement. Peace was restored at last and the people who fled Talcher returned home. So you have seen how the things are happening. So जोड़ी जोड़ी प्रजामंडल मूवमेंट ला सेठी king माने प्रजा को कंसेशन दउथले. So नीलगिरी तापर हम देखिलो ढेंकानाल then Talcher. Then about Gangpur. Gangpur तुम जानछो सुंदरगढ़ रे अछि राज Gangpur एबे ताको अछि. The Gangpur प्रजामंडल movement too assumed that same thing, everything happened like that only. तो सेठी जतले राजा को डेथ हिला क्वीन को हाथ चार्ज जाइतला. तो प्रजा ऑफ Gangpur mostly belong to the Munda tribe. हला मुंडा बिरसा मुंडा सुमथिबो तो सेयाडे मुंडा वेस्टर्न ओडिसा रे बहुत मुंडा ट्राइब अछंती. तो सेता हम लीडर केतले निर्मल मुंडा. तो से प्रोटेस्ट कोले अगेंस्ट टैक्स इंक्रीज एवरीथिंग. तो से जतले hence he incited the people not to pay taxes. जतले टैक्स कमे गलानी से कोले तो टैक्स दियोनी. Civil disobedience movement kind of thing. तो सतले कौन कोले रानी requested assistant political agent Lieutenant Magar to arrest him. हला तो पुलिस कौन कोला से जतले तारे पुलिस कौन कोला डिस्कशन कोला with the people so that movement वगैरह शांत हो जाओ. तो सतले कौन होला while having discussion with the people the police misinterpreted the people's languages and their signs. So the tribal लोग थिले तो तांग माने को भाषा रे कहले कोन साइन करथले माने बुझी पालेनी. तो से पे कौन होला it resulted in an unprovoked firing by the British on innocent people and many were killed and injured. Many denounced the British for having resorted to such barbaric acts, but even the Queen of Gangpur showed no sympathy. Okay, so एडी के लीडर थे निर्मल मुंडा कोडी तमरो गांगपुर रे. एडी के लीडर थे तालचर रे पवित्र मोहन प्रधान. ढेंकानाल के थिले mainly your Hare Krishna Mahatab, Namakrishna Chaudhary, Sarangadhar Das and all, and your Nilagiri ke thile Kailash Chandra Mohanty, Bonamali Das. Hare Krishna Mahatab, Sarangadhar Das, they are involved in everywhere of course. Okay, तालचर के पवित्र मोहन प्रधान. Gangpur के निर्मल मुंडा. Now Ranpur, Noyagarh district. This is a very important, very nice happened in Ranpur, जोड़ा कि Noyagarh राष्ट्रीय में. So सेमन सिटी भी people सेवला demand करतले. So that happened in 1939. So second phase जोड़ा देखो तुम्हारे almost 1938-39 रे बहुत दिसो है चे. The king imprisoned the rebels. तो सिटी तो rebel हल तांको imprison कर दिया गला. But later on तांको कौन हला लोग माने कौन बेसिक strike कोले जब leader मान को कर दिया गला. तो से पे से सपोर्ट देखो पॉलिटिकल एजेंट माने रहउतले. तो सेठी थिले के मेजर बेजल गेट. तो मेजर बेजल गेट डाकले तो 5th जनवरी 1939 रे कोन हला गोटे ह्यूज क्राउड एकट्ठा हला पैलेस को जीवा पई. तो बेजल गेट भी पुलिस मान को सहित सेठी आसी गला. बट बेजल गेट जतले ओपन गोटे लाइक फायरिंग कले गोटे लोकरो डेथ हे गला.
तो सेते लोकमान रागी कोन कले लाइक यू कैन रिमेंबर चोरी चोरा इंसिडेंट काइंड ऑफ थिंग तो बेजल गेट को समस्त अटैक कर देले हला तो बेजल गेट को बहुत मर्सिलेसली ताको बाड़ा हला हला से बहुत लुचियो चेष्टा कला बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ रघुनाथ महांती एंड दिवाकर परिडा तो रघुनाथ महांती दिवाकर परिडा इंस्ट्रक्शन रे बेजल गेट वाज beaten and killed ओके तो एते ताको मार हला जे सेठी तारो देहांत हे गला सो बेजल गेट सकम टू हिज इंजरीज तो एथरे जते ब्रिटिश पर्सन रे डेथ हला आ कोड हिनथला जते एठी हला रणपुर तो ब्रिटिश माने कोन बहुत ज्यादा रूथलेस रिप्रेशन स्टार्ट कर देले फॉर दिस प्रजामंडल मूवमेंट एंड ब्रॉट एन एंड टू द रणपुर प्रजामंडल मूवमेंट तो ए जे जो माने इन्वॉल्व थे सेतु 26 लोगों को माने ट्राई कले एंड रघुनाथ महांती एंड दिवाकर परिडा ताको ह्यूज पनिशमेंट दिया गला रघुनाथ महांती को हैंग कर दिया गला एंड दिवाकर परिडा वाज डिपोर्टेड टू द अंडमान्स so these two names you should remember Raghunath Mohanty it should be Mohanty not Monanti it should be Mohanty okay let it be there Raghunath okay we'll change later on okay. Now the Prajamandal movement in Nayagad Prajamandal was continued in Nayagad in June 1938 under the leadership of whom Narayan Nanda तो देखो सब जगह गोटे लोकल लीडर रहउछन जेमति तमरो रणपुर रे के थिला रघुनाथ महांती एठी केला नारायण नंद द प्रजामंडल continued in Nayagad in June 1938 under the leadership of Narayan Nanda a charter of demands was submitted to the ruling chief it continued demands of civil liberties abolition of feudal dues and people's participation in a responsible government the Prajamandal resolved to launch an agitation and carry it until their demands are fulfilled तो नयगढ़ रे बेसिकली भी से वाला सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट होतला हला तो इनिशियली बेजल गेट एक्चुअली एडी आस्तले बट जतले रणपुर रे बेसी ह्यूज हेगला से सेठी की पळितले हला तो सेठी तो फाइनली बेजल गेट कटर पॉलिटिकल एजेंट जो बेजल गेट थले तांकर डेथ हियैतला ओके सो देन इन बणी आल्सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंड ओके 1938 एंड सोनपुर रे भी मेन लीडर थले लोकनाथ सतपति मोहन मिश्र आ गोटे एठी गोटे सोनपुर स्टेट प्रजामंडल भी हितला डिसेंबर 1930 रे तो प्रेसिडेंट कितले भीमसेन भोई हला तो एठी दे तीनटा नाम बहुत इंपोर्टेंट अछि भीमसेन भोई कोडी सोनपुर रे भोई लोकनाथ भीमसेन भोई लोकनाथ सतपति मोहन मिश्र ओके तो एबळे सेठी भी एबळे लीडर थिले देन लेटर ऑन नरसिंह प्रसाद नंद गोटे गोटे स्टूडेंट्स कांग्रेस भी हितला ओके आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 तो एटा बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 हितला मेनली लीडर थिले के भीमसेन भोई लोकनाथ सतपति मोहन मिश्र बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 नरसिंह प्रसाद नंद दुर्योधन सतपति सुरेश मिश्र सत्यनारायण मिश्र एमाने सोनपुर हाई स्कूल थिले नरसिंह प्रसाद नंद रेवेन्सा कॉलेज थिले सेमान गोटे स्टूडेंट कांग्रेस एस्टैब्लिश करथिले आ गोटे 1946 रे गोटे बगचेरा विलेज रे मीटिंग हेतला तांकर अंडर सरंगधर दास so you can see here almost everywhere सरंगधर दास and हरे कृष्ण महताब involved then मयूरभंज रे 1940 रे गोटे प्रजामंडल फॉर्म हेतला तार के लीडर थिले शरद चंद्र दास was the president so तो जते प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हेगला मयूरभंज रे तो जते सब अन्य सब सक्सेसफुल होतले तो एठी राजा कोन कले जे थिले प्रताप चंद्र भंजदेव से गोटे प्रजा मंगल बोली गोटे स्टार्ट कले ऑर्गेनाइजेशन हला पैरेलल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड दैट इज प्रजा मंडल रो प्रजा मंगल एंड दे स्टार्टेड डिलीवरिंग असिस्टेंस टू द पीपल बट द प्रजा मंडल स्लोली एंड स्टेडीली परस्यूड द मूवमेंट इन अ नॉन वायलेंट मैनर फाइनली इन 16 September 1947 it represented a charter of demands of the king Maharaja Pratap Chandra Bhansdev it means what the Sharat Chandra Das ko lola lead करौतला जो प्रजा मंडल मूवमेंट सेते कोन थिला डिमांडेड फॉर द रिफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन देन तो सेतो कोन हला गोटे किंग वाज फोर्स्ड टू फॉर्म अ 3-man कैबिनेट व्हिच वाज इंक्लूडेड शरद चंद्र दास तो गोटे कैबिनेट से बनेथिले जोते कि शरद चंद्र दास भी थिले ही बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुकिंग आफ्टर द वेलबीइंग ऑफ द पीपल हला तो से गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल वाले मोनार्की सिस्टम एस्टैब्लिश भी कर देथिले जोडे कि एबे सेथिरे बेसिकली कलेक्टर ऑफिस एबे अछि मयूरभंज रे बारीपदा रे हला तो से पे से बेसिकली इनिशियली भी से इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करथले जतले तमरो सरदार वल्लभ भाई पटेल माने सबु 24 रो 23 प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन कर देथले आफ्टर इंडिपेंडेंस but Mayurbhanj state after 1 year it signed the instrument accession because of this because he told that I had already made a 3-man cabinet like like constitution system adopt heitla nijara hela so we discussed everything now consequences of the Prajamandal movement finally jo etik sara movement ame padhile Nilagiri Talcher you know Ranpur Mayurbhanj Dhenkanal तो ए सब मूवमेंट रो कोन consequences कोन हला फर्स्ट हम रीजन पढितलु तापर कोडी कोडी हला पढलो तार consequences कोन so it was successful in putting forth the demands of the people in a very forceful way
So because of this kind of movement, what happened? जो आगुर जब माने राजा माने कौन लोक मान को कथा सुन नथले, because of this unity kind of thing, movement, people's movement, so the तांको demand टा बहुत forcefully apply हैला. Killing of Bezelgate जोड़ा रणपुर नयगढ़ रहितला, Bezelgate जे की political agent थिला, that is a proof of this thing. Hence the kings became tolerant towards the people to certain degree. तो सेपन जो king माने अगर अत्याचार करले सेटा को न करी तांको concession देबा start कले. So in 1939 the government of Odisha set up a state inquiry committee and came to know the reasons for the movement. It was evident that excessive oppression by the kings was the root cause of the movement. 1939 already 1937 to 39 पर्यंत गोटे कोन थिला कांग्रेस सरकार थिला ओडिसा रे जाको हरे कृष्ण महताब हरे कृष्ण महताब सेतल नथिले. Another chief minister was there. Okay, the people realized that non-violence was the most effective weapon. So people man realize भी कले कोन non-violence जोगु कोन British माने भी तांको help करछन, even Congress was helping them. Okay, so they possessed and they had a firm conviction that it was through this their demands could be fulfilled. Finally, the Prajamandal movement was a catalyst in accelerating the process of merger of the Garajat or the native princely states. So because of this non-violence, the Prajamandal movement was become a catalyst in accelerating the process of merger. So Prajamandal movement already in 1938-39 he जाइथिला बोली जतरे independent हला India, it become very helpful for the merger process. The Prajamandal movement opened a new chapter in the history of Odisha. Tyrannized by the kings for generation, the people finally raised their voice against the institution of monarchy as a whole. So the जो वर्ष धरी like from the last 600-700 years they are ruled by the feudatory kings. So finally they raised their voice against the monarchy and were successful to a large extent in achieving their demands. The Congress too rendered assistance to the people in their democratic campaign. Congress can assist because they used to follow the non-violent method. Then the Prajamandal movement sounded the death knell of monarchy in Odisha. So because of this Prajamandal movement, finally the merger process was established in 1947-48. Okay, so this is it. So I hope it will actually यार आगोटे भी पार्ट होबो जोते कि हमें हरे कृष्ण महताब विषय भी पढ़िबा and केमती merger process हिला कहा पर कोटा we'll see. Okay, so another video will come regarding this Prajamandal movement and Hare Krishna Mahatab. Okay, so this is a Telegram group, you can join for the notification of the videos. Okay, OPSC exam revise. Okay, and so thank you so much. And तमे कोन करियो जो वीडियो रे तमरो feedback दो please. Okay, Hare Krishna.